Hello student. This is Ashish Tripathi from Mount Graduate School Jhansi, computer teacher. Now you can see this one. First of all, how are you? I think all of you are fine. Stay safe, stay sanitized, and prepare yourself for the upcoming examination. Now today I am talking about the data handling. Data handling means handling of data. इससे पहले भी मैं वीडियो दिया था, उसमें भी यही सब बताया था. नाउ द नेक्स्ट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस. ऑपरेटर प्रेसिडेंस मींस इफ नंबर ऑफ ऑपरेटर आर इन द सिंगल ऑफ एक्सप्रेशन, देन विच ऑपरेटर विल followed first and then the next, then the next. The following table given, it is shown about the operator precedence. It is totally, as we are doing in mathematics BODMAS rules, here we are doing the PEDMAS rule: parenthesis, divide, multiply, subtract, and according to this label, highest to lowest precedence we have given. Means highest will come the parenthesis and the lowest will come the boolean option. Next one is operator associativity. Operator associativity means Python allow multiple. In Java, C++, number of the operators are not allowed in a single operand, but Python allowed number of operator in a single operand. And in that case, depending upon the use of the parenthesis, left to right associativity or right to left associativity, it depends upon the operator and the parenthesis and how they have used inside that expression. According to that, the operator will be associated. See, the default order of evaluation: first expression matches with the second expression, where parentheses are added as a right to left. Associative order not like third expression, that is the parenthesis from left to right. Means एक ही expression में right to left भी हो सकता है और left to right expression भी हो सकता है. Now next one is the expression. What the means for expression means? Expression means the Python any valid combination of operators and items. Just x square to ax square plus bx plus c. A plus b greater than c into d or a into b less than c into d. Means combination of operand and operators is known as the expression. There are an atom is a something that has a value. For example, x is an atom because it has the value 2. So a literal, string, list, tuple, set, dictionaries, all are atoms. And combination of atoms and operators are known as the expression. अब एक्सप्रेशन को कैसे एवेल्यूएट किया जाएगा, इसके लिए हम पीछे दिए हुए जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल थी उसका भी यूज करते हैं और डिफरेंट लेफ्ट टू राइट ऑपरेटर एसोसिएटिविटी यूज करते हैं. इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन या एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का यूज करते हैं. इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन मीन्स implicit type conversion means when the value is automatically converted, whereas explicit type conversion means user has to convert. For example, from integer to float, character to integer automatically converted that by the system. It is implicit type conversion. Whereas explicit type conversion means where the values user just say from float to integer to character, this user has to do. That is the explicit type conversion. So implicit type conversion and explicit type conversion, operator associativity and precedence of operator, all the things will be followed when we are doing the expression. Now the next one is logical expressions. Logical expression, relational expressions. एक्सप्रेशन बहुत सारे होते हैं, जैसे लॉजिकल एक्सप्रेशंस है, रिलेशनल एक्सप्रेशंस है जिसमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स आते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, प्लस और ऑन एंड नॉट, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन. So these all the expression we have to do according to the operator associativity, typecasting, type conversion and operator precedence. अब बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपके संग डिस्कस भी किए हुए हैं कि व्हाट विल बी द आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. सो इट डिपेंड अपॉन द वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम. अब कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं दैट यू हैव टू डू बाय योर ओन माइंड. ऐसा नहीं होता है कि हर चीज अकॉर्डिंग टू, बहुत सी चीजें ऐसे भी फॉलो हो जाएंगी इन दैट वन कि अरे यार ये तो हम ऐसा सोच सकते थे, देन वी कैन ऑल्सो डू इन दैट वन. नाउ टाइप कन्वर्जन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था. टाइप कास्टिंग फिर भी एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ. टाइप देयर इज अ कास्टिंग. कास्टिंग मीन्स टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ द वैल्यू इनटू अनदर टाइप. इट इज नोन एज द टाइप कास्टिंग. नाउ कास्टिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. वन इज द implicit type casting, explicit type casting.
and implicit typecasting done by the system or compiler, whereas explicit typecasting done by the user. From lower data type to upper data type, that will be implicit typecasting, means integer to float, integer x equal to 10, फिर लिखा हुआ float x equal to 10, float x equal for float y equal to x, integer will automatically convert into float. But you now character x equal to 65, now you have like integer z equal to x, तो z का जो ASCII कोड होगा 65 वो ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट मीन फ्रॉम लोअर डेटा टाइप टू अपर डेटा टाइप इट विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड, दैट इज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग. नाउ और अगर फ्लोट से इंटीजर में, इंटीजर से कैरेक्टर में, इन सब और लेके आया जाए, दैट मीन्स means agar we are writing the value float 15.5, float x equal to 15.5, and we are writing integer x equal to integer y equal to x, it will provide a error. You have to write integer x equal to int or integer y equal to int of x, मतलब जो x की वैल्यू से इंटीजर में कन्वर्ट करके y में स्टोर करो. तो that is depend upon the given condition that you have given. Now expression evaluation में पहले से ही बता चुका हूँ. It depend upon your own wisdom and the operator accessibility, operator's precedence in these all the things. Now at last they are giving working with the math module of the file. पहले समझिए module क्या है. Module is the smallest part of the program, or your program is divided into number of the parts, and that part are known as the modules. So here the module means functions. मत जैसे कि mat.pow, mat.ceil, mat.strd, mat.exp, mat.pef, mat.log, mat.pow, mat.sin, mat.cos, mat.10, mat.degree, mat.details. ये तो थोड़े से फंक्शंस हैं, बल्कि जावा की पाइथन की जो लाइब्रेरी जावा या सी प्लस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. It has number of the built-in functions. These are the built-in function. Or in class 12 you will learn not the built-in function, the function that is built by the user, means आपने जो functions बनाए उन functions को system में कैसे use करना है, that is done by the user. That is also user defined function. So Java की library में जो functions है मैंने उसके बारे में आपको totally describe करके बता दिया. Now यहाँ पे they have also given you the examples of, or also we have discussed about these modules of the MES के modules के बारे में मैंने already आपसे discuss कर रखा है. If you are having any problem today in the live class, you can ask, or continuous 3 days the live class is there, you can ask. And please remember all the 3 chapters that I have given you, starting with Python fundamental, data handling and programming. These 4 will come in the upcoming examination, and in upcoming examination you have to give the answer of multiple choice questions. So prepare yourself for the upcoming examination. All the best. Stay safe, stay home, and use this lockdown period for your study purpose. Thank you.